Okay, let's start. So, Assalamu alaikum to everyone again. I hope you guys can hear me. So, this session, काफी लोग पूछ रहे हैं in the chat के what is this session about? So, it is specifically about the AKU test. AKU की applications recently open हुई थी, right? And they closed on May 4th. The applications बंद हो गई हैं. And AKU test की जो अभी date है वो है 6th of August, ठीक है? So, this session is based on centered on how to ace the AKU test. आप AKU test किस तरह से अच्छे से उसकी preparation कर सकते हैं and किस तरह से पेपर को attempt करना है, ठीक है? So with me, like my name is Balaj Rizvi. I'm a first year medical student at the Aga Khan University. With me is Zainab Haider. She's my batchmate at Aga Khan, and alongside her is Hania Fatima. She is also my batchmate. So the three of us will be guiding you through the whole pattern of the exam. ठीक है, pattern क्या होता है, कैसा कितना टाइम होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ से पढ़ना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, all of stuff. ठीक है. So I'll pass on to Zainab. We'll continue from here. Hello, Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for joining us today, and I hope you all are doing well. So I know this must be a very tumultuous time in your life, and we're here to guide you and help you through this, just like we were able to do it. Inshallah, you'll be able to do it too. So let's begin. As Balaj mentioned, and I'll reiterate, we had the online applications for AKU prior to this from 13th March to 4th May. And following that, now we're going to have the AQ test, which is going to be on the 6th of August. And after that, in the test, the people who are going to pass the test are going to make it to the next step of the applications, which are going to be the interview, which will be held around September. So talking a bit about statistics for the class of, for our class, we had about 8,000 applications in the test phase of the application, and then we had about 300 applicants for the interview. So that is what the data is going to look like for you guys too, most likely. So I think we can move on to the next slide now. Okay, so talking about the AKU test requirements, academic requirements that we have, we're going to have two routes here. If you did metric followed by FSC, and then we're going to talk about what the requirements are if you are from an O-level, A-level background. So let's cover the FSC background first. So you need a minimum of 70% and of course pre-medical. And for O-level and A-level, you need at least 6 subjects in O-level, which include English, biochemistry, and physics, and you need a minimum of B grade in those subjects. And then followed by your A-level grades, you need chemistry, bio, and physics, and a minimum of B grade in those two. So we can move on to the next slide. So let's talk about the test pattern and how the test is going to look like for you guys. So we are going to have a total of 100 questions. The test pattern, we have a science section and a reasoning section. And we have 3 subdivisions of the science section, which is biology, chemistry, and physics. And we have 2 subdivisions of the reasoning section, math reasoning and science reasoning. In each of these subdivisions, we're going to have 20 questions each. And an important fact to note here is that for the science section, chemistry, bio, and physics, we're going to have negative marking, which basically means that if you get one question wrong, so you're going to have a reduction of 0.25 marks. And there is going to be no negative marking for the reasoning section. The total amount of time that you're going to get is 120 minutes. It may seem like you have 100 questions and 120 minutes, so you're not going to run short on time, but believe me, on test day, the biggest problem you'll face is the shortage of time. So we can move on from the test pattern. So let's dive a bit into the depth of the sciences section. As already mentioned, we are going to have three subdivisions for it, 20 MCQs each and 60 MCQs in total. And we're of course going to have 0.25 of negative marking in this section, as I mentioned before this. And one thing to note here is that you guys have the syllabus for sciences section already available on the AKU website. We have very kindly input the
link here. You can access it from here. So please go through this syllabus and use it as a checklist when you're preparing for the science section, because the paper, this is where it's going to come from. It's not going to come from, I don't know, 100 different places. This is the guideline. This is the checklist. This is where it's going to come from. We can move on to the next section and talk about it in detail now. So the reasoning section, I mentioned above, two sections, math and science reasoning, 20 MCQs each, 40 MCQs in total. There is going to be no negative marking in this section. So if you are not sure about anything, just go for it and mark anything. Feel free, इसमें तुक्का लगा सकते हैं आप. उसमें you cannot you cannot do that in the science section because you're going to have negative marking there. So, and the thing, a very pertinent question that students have about the math reasoning section is that I didn't take math in A level and we don't have math in pre-medical. So, will we be able to solve this? And that is, you will completely be able to solve it because it's like your basic math skills. Those are required. It's not anything advanced. It's not anything out of this world hard. So you'll be able to do it. Yes, with your prior O-level and metric intellectual knowledge. These are basically they test your IQ and your comprehensive skills more than your advanced math knowledge and reasoning. So we can move on to the next section now. Okay. So here are just a few general guidelines that we have to attempt the test. So we recommend you start off with the non-calculator sections. Another thing to notice keep into account is that you are not allowed the use of calculator in the AKU test. You cannot use it for any of the sections. So what we mean by non-calculator section is the sections that do not require calculations that you have to do manually. आपका plus minus keyword for bio you don't need to do that. For science reasoning you don't need to do that. Chemistry में yes you can have moles questions and just the basic. You need to do the basic math and you can do that without calculator. And I mentioned the negative marking prior to this. And very important thing for the AQ test is read everything carefully. You're going to have the minutest of details that are going to be very pertinent and very crucial in the question solving. In deriving the right answer, it's going to be just this one tiny word that's going to make all the difference. So please take those into account and read the questions very, very carefully. Take your time reading them, mind the clock, but take your time to read those questions. And time management, as I mentioned before, is going to be a battle to manage the time. Frankly, when I was attempting mocks, I didn't run out. I thought that I would be fine. I was doing fine with the time management aspect. But on test day, there are extrinsic factors that come into play. You have test day anxiety. You have other things going on. You have stress on your mind. You have other things. So the time management will be a hard task to manage, but it's nothing that you won't be able to do, inshallah. Moving on. Okay, so beginning now, we just have this AQ timetable for you, which is going to navigate a 65-day AQ prep timetable that we have prepared for you, which can help you set up goals for yourself. Okay, this is what you need. This helps break down the content into chunks and pieces so that you can refer to this, use it as a checklist to prepare. And since we have 65 days from today till the test, you should utilize this time to the fullest. Study consistently, put in good quality work, and do a certain uh, quantity of hours every day. It's quality, quantity, and your consistency that's going to come into play. Now I'll be passing on the mic to Balaj, and he's going to talk about how to get the score that is required to pass the test. Yeah, so अब common question आता है कि how much do I need to score in order to get into AKU? मुझे कितने marks लाने AKU test में ताकि मेरा AKU के अंदर
इंटरव्यू स्टेज तक मैं पहुंच सकूं, ठीक है, ताकि मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो सकूं। तो हर साल एक कट ऑफ बनता है, ठीक है, और कट ऑफ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कट ऑफ पहले से डिसाइड हुआ होता है, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। कट ऑफ बेसिकली इस तरह से डिसाइड होता है कि आप सब जब एग्जाम दे के आएंगे ना, तो आप सबने कोई ना कोई मार्क्स स्कोर किए होंगे, राइट। जो टोटल मार्क्स हैं 100 में से होते हैं, ऑब्वियसली आपने कोई एक मार्क्स स्कोर किया होगा। जो फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स है ना, उनमें से जो मिनिमम स्कोर आया होगा, फॉर एग्जाम्पल जो पहले स्टूडेंट के मार्क्स आए वो है फॉर एग्जाम्पल 100 में से 100 आए पूरे, ठीक है। फिर सेकंड वाले के उससे कम, थर्ड वाले के उससे कम, फोर्थ वाले के उससे कम, तो इस तरह से जो 300 स्टूडेंट होगा ना, या 350, आई एम नॉट रियली श्योर, उसकी जो परसेंटेज बनेगी ना 100 में से, वो डिसाइड हो जाता है आज तक कट ऑफ, ठीक है। तो ये एक एवरेज कट ऑफ कहलाता है। अब इस कट ऑफ से जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, जाहिर सी बात है वो उन 300 के अंदर होगा वाला स्टूडेंट, तो वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाए, ठीक है। So this is how the cutoff is decided, and this is exactly how the cutoff or the passing threshold is also decided for the entry cap, ठीक है। बट उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक के लिए कट ऑफ इस तरह से डिजाइन होता है, राइट। तो हमारे साल जिस लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, जिस साल मैंने एग्जाम दिया था, दैट वाज 62% साइंसेस का भी और रीजनिंग का भी। अब एक टेस्ट पास करने के लिए आप लोगों को साइंसेस वाला सेक्शन अलग पास करना है और रीजनिंग वाला सेक्शन अलग पास करना है। काफी सालों पहले ये होता था कि साइंसेस और रीजनिंग का मिलाकर एक थ्रेशोल्ड बनता था, और फॉर एग्जांपल किसी के साइंसेस में से अगर कम आए ना, तो वो रीजनिंग में ज्यादा लाके उस पूरे ओवरऑल थ्रेशोल्ड से ज्यादा लाके पास हो जाता था। अब से ये हो रहा है काफी, आई मीन रिसेंट ईयर्स में अब ये हुआ है कि साइंस और रीजनिंग दोनों के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना नेसेसरी है इन ऑर्डर टू पास दैट, ठीक है। तो लास्ट ईयर 62% था। उससे लास्ट ईयर आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा था, बट आई एम नॉट रियली श्योर, बट लास्ट ईयर का जो था दैट इज 62%, ऑलराइट। So, and by the way, you only need to pass the AKU test, ठीक है। इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको सिर्फ AKU टेस्ट पास करना है। You don't need to score 90% और 100%। मेरे बैच में स्टूडेंट्स हैं जिनका 62.5% पे भी they cleared the test and they are my batchmates, so वो AKU में पढ़ रहे हैं अभी। एंड ऐसा भी होता है कि 90 वालों का नहीं होता बिकॉज their इंटरव्यू गेट्स मेस्ड अप, ठीक है। सो दिस इज वन स्टेज टू पास, तब जाके आप इंटरव्यू के लिए पहुंचेंगे। तो यू जस्ट हैव टू पास द AKU टेस्ट। Assalamu alaikum everyone. This is Hania Fatima. I am also from year 1 at AKU. So now we are going to talk about the resources that we all personally used and we found them very helpful. So for sciences, everybody knows Punjab and federal textbooks are extremely important. You must go through all the kingdoms from Punjab as well as federal textbooks, and Punjab physics is really good. फेडरल की भी अच्छी है, बट आई पर्सनली फाउंड पंजाब की फिजिक्स बहुत अच्छी। सेकंड, ऑन सेकेंडरी वी हैव कैपलन। कॉलेज बोर्ड ने अपना SAT-2 टेस्ट तो डिसकंटिन्यू कर दिया है, लेकिन उनकी अभी भी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो अवेलेबल है। बलाज, यू वांट टू कंटिन्यू? Yeah, thank you for covering, Hania. हाँ, so I was talking about कि syllabus जैसे mention किया था, that was on the website, तो आप लोग वहाँ से जाके syllabus डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब resources basically दो तरह से डिवाइड होती हैं। एक होती है प्राइमरी रिसोर्सेज, ठीक है, और एक होती है सेकेंडरी रिसोर्सेज, और उसके बाद आती है आपकी प्रैक्टिस वाली रिसोर्सेज। जल्दी से कवर कर लेते हैं। प्राइमरी रिसोर्सेज वो होती हैं जहाँ से आप अपना मेन सिलेबस जो आउटकम्स है ना, लर्निंग आउटकम्स जो कि सिलेबस में लिखे हुए हैं, वो आपको कवर करने, यानी कि यहाँ से टेस्ट आएगा। तो बायोलॉजी जो होती है वो आपको पंजाब बुक से कवर करनी है, ठीक है। ये आपके पास प्री डिफाइंड है, क्योंकि AKU का जो सिलेबस है ना वो मैच कर रहा है पंजाब के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं। तो पंजाब की जो टेक्स्ट बुक है ना 11th और 12th की, वहां से आप बायोलॉजी कवर करेंगे। केमिस्ट्री के लिए आप फेडरल की बुक यूज करेंगे और पंजाब, तो ये दोनों बुक्स मिलाकर फेडरल और पंजाब केमिस्ट्री के लिए यूज होंगी। एंड फिजिक्स के लिए यू यूज पंजाब बुक, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज। सेकेंडरी रिसोर्सेज वो होती हैं जो आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्टफ बेटर, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपकी प्राइमरी रिसोर्सेज में यानी कि पंजाब या फेडरल बुक्स में कोई पिक्चर दी गई जो कि अनक्लियर है, या कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसकी ग्रामर अजीब सी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, देन यू मूव ऑन टू सेकेंडरी रिसोर्सेज। और वो कौन सी होती हैं? वो आपके पास कैपलान की बुक्स हो गई, बैरेंस की बुक हो गई, SAT-2 की बुक्स हो गई, ठीक है। ये सारी बुक्स आपको जो हम ड्राइव की लिंक देंगे ना उस पर अवेलेबल होंगी, राइट। सो ये सेकेंडरी रिसोर्सेज होती हैं जहाँ से आप अपनी प्राइमरी रिसोर्सेज में जो चीजें कम है ना वो आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, लेकिन मेन कंटेंट आपको प्राइमरी से कवर करना है, राइट। देन आपके पास आती है मैथ रीजनिंग और साइंस रीजनिंग। इसका सिलेबस अवेलेबल नहीं, राइट। बट जहाँ तक देखा गया है कि मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो यूजुअली O लेवल मैथ के कंटेंट से आ रहे होते हैं, ठीक है। तो O लेवल मतलब ये कोई फिक्स चीज दी भी नहीं है, हो सकता है कहीं और से भी आ जाए, बट देखा ये गया है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जो कंटेंट होता है, यानी कि
जिस तरह से वो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी टेस्ट होती है, राइट, बेसिक मैथ टेस्ट होती है, फ्रैक्शंस वगैरह बहुत ज्यादा टेस्ट हो रहे होते हैं, तो ये सारे आपको ओ लेवल मैथ में मिल जाएंगे। तो इफ यू डू ओ लेवल मैथ प्रैक्टिस ना, तो टेक्निकली आपकी मैथ रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो रही होती है। सिमिलरली आप सैट 1 मैथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आप पैंडा मैथ की वर्कबुक भी यूज कर सकते हैं। तो इन तीनों में से आप कुछ भी कर लें, आपकी मैथ रीजनिंग की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड साइंस रीजनिंग के लिए, क्योंकि इसका ना सिलेबस है और हम जज भी नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं, तो वी हैव सम प्री कंपाइल्ड क्वेश्चंस ऑन प्रीमेड। तो जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए उसको हमने कंपाइल किया हुआ ऑन प्रीमेड, एंड यू हैव एसी की साइंस क्वेश्चन। तो इनसे सिमिलर क्वेश्चंस आपको टेस्ट में आ रहे होते हैं। तो इफ यू प्रैक्टिस दीज ना, तो यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से साइंस रीजनिंग के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, राइट। देन साइंसेस की जो प्रैक्टिस है, यानी कि बायोकेम फिजिक्स की जो आपने कंटेंट पढ़ लिया, याद कर लिया, उसको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, वो आप PreMed.PK से कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपके पास टॉपिकल पेपर्स भी हैं, और टेस्ट डेट के करीब जाके, यानी कि अराउंड एंड ऑफ जुलाई, वहाँ पर आपको ईयरली पेपर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, मॉक एग्जाम्स जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो यूज AKU एजुकेशन बोर्ड के जो पास पेपर्स होते हैं, ठीक है, just for practice. But me personally, I only use PreMed.PK, so that was enough for me. So yeah, these are the resources for practice. So this basically covers everything regarding. Alright. So PreMed.PK की जहाँ तक बात है, how can PreMed help you in preparing for your AKU test? तो स्टेटिस्टिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो लास्ट ईयर जो AKU का बैच ऑफ 2027 है, 100 में से 35 कैंडिडेट्स वो हैं जिनको हमने पर्सनली गाइड किया था लास्ट ईयर, इंक्लूडिंग मी। सो मुझे मेरे सीनियर से तहा शेख वगैरह ने, हसनैन मलकानी, फहद, इन सब ने मुझे गाइड किया था रिगार्डिंग दी AKU टेस्ट, एंड थैंक्स टू देम आई एम पार्ट ऑफ द AKU कम्युनिटी नाउ। सो अराउंड 35, सो हमारा अगर एक्सेप्टेंस रेट देखें, so that is like 35% of students in this batch are basically use PreMed.PK. So we have Kamil Suhail, इसका आप comment कर सकते हैं, करिश्मा का comment कर सकते हैं, these both are my batchmate. Similarly, you have Fatma Masood Sibra, she's also my batchmate. Saifur Rahman, he's a senior of mine. On a bus, my batchmate, Muin, Zainab, you guys know Zainab, she's in the session, and Saida Hamad. So, you know, these people, they also use PreMed.PK to get into AKU. Similarly, you have Nakvi, Abiha, Zafar, Hania. So, you know, all of us use PreMed heavily. So, uske jo questions hote hain, they can really help you in practicing a lot for your exam, right? Now we move on to subject-wise preparation. So, Zainab, you want to cover this, or Hania? I'm covering it. Okay, so moving on to subject-wise preparation, we will first go with our main resource will be Punjab textbook, as Balaj mentioned कि पंजाब का जो syllabus है बिल्कुल aligned होता है AKU education board से। तो basically what I used to do is मैं print out ले लेती थी वो जो AKU ने अपना syllabus share किया है, and I used to mark it if this topic is covered in Punjab or if it is covered in federal. So this used to be really helpful. So you guys can also do that. Secondly, we have biology. Biology is where you can easily secure the most marks, so prepare it well. Biology के सारे facts याद करने हैं. Pre-med के inshallah you have a surprise for you. So pre-med will surely help you. उसके question solve करो, maximum pre-med के question solve करो. उसमें जो facts लिखे होते हैं explanation में, make sure that you memorize it. Thirdly, biology is road learning. Everybody knows कि biology में बहुत facts होते हैं, figures होती हैं, आपको ये शुरू से याद करनी होती है. स्पेस रिपीटेशन यूज करो और एक्टिव रिकॉल भी यूज करो. सेकेंडली नाउ वी हैव हाँ, सो कमिंग टू द प्रैक्टिस, आपने डेली प्रैक्टिस करनी है क्योंकि वी टेंड टू फॉरगेट बिकॉज रोज हम इतना ज्यादा ओवरलोड होता है. तो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस sufficiently from pre-med or whatever resource you use, but for me pre-med was really helpful. Can we move on? So for chemistry, I personally used Punjab, and most of my batchmates also used Punjab or federal textbooks. Punjab की organic chemistry is really nice. वो बहुत अच्छी है. उसमें everything is very structured and divided in points जो आप याद कर सकते हैं और आपको बहुत helpful होंगे. Inorganic आप federal से भी कर लो, पंजाब से भी कर लो. So both are sufficient and really good resources. Chemistry में numericals होते हैं, वो प्रैक्टिस से आएंगे. केमिकल रिएक्शंस है, वो आपने सारे याद रखने हैं. केमिकल रिएक्शंस, उनकी कंडीशंस, उनके रिएजेंट्स, जहाँ जहाँ एंजाइम्स हैं, वो सब याद रखने हैं. तो दिस इज ऑल रोड लर्निंग.
ठीक है। अब प्री मेड ने ऑलरेडी आपको हाई यील्ड टॉपिक्स का बता दिया है, सो इट इज रियली कन्वीनियंट फॉर यू टू फॉलो दैट हाई यील्ड कंटेंट. सो मेक श्योर you go, you know, okay, what is high yield and what is low yield. High yield is basically the content that is tested most. तो उस पर हमने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करना होता है. मेक श्योर कि वो हमें सबसे ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमेशा टाइम इतना नहीं होता है कि वी गेट टू कवर एवरीथिंग. सो व्हाट वी डू इज we try to cover the max portion that is coming up in the test, and then we give priority to others. But max हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो हमेशा हाई यील्ड टॉपिक्स होते हैं. ठीक है. प्री मैथ के पास इतना अच्छा क्वेश्चन बैंक है, सो मेक श्योर यू डू दैट फॉर केमिस्ट्री. यू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स, यू रिविजिट the figures you have learned over the time you have prepared. So now coming to physics section. फॉर फिजिक्स आई पर्सनली यूज पंजाब टेक्स्ट बुक. फेटल भी लोग करते हैं, लेकिन मुझे पंजाब बहुत अच्छी लगी क्योंकि एज आई मेंशन बिफोर कि AKU सिलेबस से वो काफ़ी अलाइन थी और स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था. तो फिजिक्स के लिए पंजाब इज रियली बेनिफिशियल. आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स बहुत होते हैं, सो मेक श्योर कि आपको हर न्यूमेरिकल आए, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करो. और पंजाब की बुक के बैक साइड पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं. मेक श्योर यू डू दैट. मेक श्योर यू डू प्री मेड का क्वेश्चन बैंक, सो वो बहुत हेल्पफुल होते हैं. ऑल्सो देयर इज नो कैलकुलेटेड अलाउड इन AKU टेस्ट, क्योंकि जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सिंपल अरिथमेटिक होती हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड फ्रैक्शंस में होती है. सो यू कैन इजीली सॉल्व दैट. सो देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट. लेकिन कुछ वैल्यूज आपने याद रखनी होती हैं, जैसे हमने स्क्वायर रूट ऑफ 3 याद रखना है. सो मेक श्योर यू रिमेंबर एटलीस्ट द स्क्वायर्स ऑफ 1 till 20. सो दैट इज रियली इंपॉर्टेंट और ये आपके बहुत काम आएगा. Also make sure that you have your own formula list. I personally made my own formula list after I used to do every chapter. So at the end, before paper, I was only revising formulas from there. So make sure you have that as well. Coming to the YouTube channels, I'm sure there are many YouTube channels, but what was personally useful for me and my other batchmates was this physics in seconds. They have really short videos and really helpful. You can just go over them again and again, and you will easily get the concept. Secondly, there's this WAK Academy, Wajid Ali Kambu Academy. You can go on, you can search for a topic, and then they will give you a explanation. तो वो आपके बहुत कॉन्सेप्ट्स बनाएगी. फॉर बायोलॉजी देयर इज दिस, आई रिमेम्बर कि जो PMC 2021 में जो PMC ने टेस्ट दिया था, उन्होंने बहुत ज़्यादा नीट के क्वेश्चंस दिए थे, लेकिन होपफुली अब नहीं होगा बिकॉज PMC हैज बीन रिप्लेस्ड बाय PMDC. बट मेक श्योर कि यू गाइस डू चेक आउट रितु रतेवाल. उसके जो बायो की वीडियोस होती हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं. अच्छा, I'd like to jump in here and say one thing कि तुम्हारा एम क्या होना चाहिए. लाइक एम तुम्हारा ये है कि तुम्हें AKU टेस्ट पास करना है, राइट? दैट इज द मेन एम, राइट? एंड AKU टेस्ट पास करने के लिए व्हाट यू नीड टू नो इज रिटन इन द AKU का सिलेबस. तो इट डजंट मैटर. आई मीन, मैंने प्राइमरी रिसोर्सेज तुम लोगों को बता दिए, लेकिन फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये हुआ था और काफ़ी लोगों के साथ ये होता है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि फॉर एग्जांपल कोई एक चैप्टर है ना जो कि बहुत ही वाहियात तरीके से लिखा हुआ है किसी एक बुक में, ठीक है, एंड वो बिल्कुल भी वहाँ से पढ़ा नहीं जाता. मेरे लिए ये चैप्टर किंगडम्स वाले चैप्टर थे, ठीक है. तो आई वुड से अगर वो चैप्टर किसी बुक से नहीं पढ़ा जाता, जो मैंने मेंशन किया जैसे कि पंजाब वाली बुक हो गई, यू कैन ऑलवेज जंप ऑन टू यूट्यूब. लाइक यूट्यूब पे बहुत लोग हैं यार जो वीडियोस बना रहे होते हैं, काफी लोगों को वीडियो से ज्यादा समझ आ रहा होता है देन फ्रॉम द बुक्स, ठीक है. इवन इन मेड स्कूल काफी लोग वीडियो से पढ़ रहे होते हैं, काफी लोग बुक से पढ़ रहे होते हैं. तो आप लोग का एम AKU सिलेबस का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो कवर होना चाहिए, ठीक है. अब चाहे वो आप प्राइमरी रिसोर्सेज से करें या आप यूट्यूब वीडियो से करें या आप किसी नोट्स वगैरह से करें, ठीक है. तो एम आपका ये होना चाहिए. तो आई थिंक इससे आपका वो सवाल भी एड्रेस हो गया होगा कि काफी लोग पूछते हैं कि क्या मैं इस अकेडमी के नोट्स यूज कर सकता हूँ, क्या मैं इसके नोट्स यूज कर सकता हूँ. भैया आप नोट्स कोई से भी यूज करें, एम आपका क्या होना चाहिए कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए दैट अलाइंस विद योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपके AKU की वेबसाइट पे अवेलेबल है.
Another thing I want to say is कि physics में मैंने एक और channel use किया था, that was physics वाला, not Allah वाला physics, that was physics वाला. And उसकी जो videos हैं, अब the thing about that is, और ये जो सामने biology की NEET की लिखी हुई है रीतू रट्टेवाल, they teach about NEET. ठीक है, वो नीट का सिलेबस कवर कर रहे होते हैं. नीट इंडिया का एमकैट है बेसिकली, राइट? लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा कंटेंट उसमें होता है, तो यू विल हैव टू फिल्टर सम स्टफ आउट, राइट? अब जो फिजिक्स वाला है वो कैलकुलस वगैरह और मैथ यूज करके फिजिक्स समझा रहे होते हैं, और हमारी फिजिक्स जो है वो मैथ से कोसों दूर है, राइट? जो कि नहीं होना चाहिए, जिससे भी बट ऐसा है, ठीक है? तो आपको खाली फॉर्मूलाज याद करने हैं, तो यू जस्ट ओनली वॉच द वीडियोस जो कि रेलेवेंट टू योर सिलेबस है, राइट? तो ये मसला होता है यूट्यूब वीडियोस यूज करने के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं जो कि आपके सिलेबस में नहीं होती है, तो जस्ट बी ऑन योर टोज फॉर दैट, राइट? एंड केमिस्ट्री के लिए वाक अकेडमी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था. सो आई वुड लव कि इफ यू गाइस गो चेक हिम आउट, ठीक है? इसकी वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, एंड नॉट ओनली द वीडियोस बट बुक्स से भी इसको अलाइन कर लेना, ठीक है? बुक में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है और वीडियोस में लिखी हुई है, तो दोनों को अलाइन करके पढ़ना, ऑलराइट? सो नेक्स्ट प्लीज. Yeah, specification of field. Coming to the specification of yield, so basically we are starting with biology कि सबसे ज़्यादा high yield कैसे आपकी pre-med ने ये भी मसला solve कर दिया है कि high yield और low yield का लोगों को problem रहता है. So the biology, it is not really tested. It is just basic introduction to what is cell, what is biology. So I don't think so आपने इसमें इतना इसकी depth में नहीं जाना, but do make sure that you give a read. अच्छा, for secondly, biological molecule, it is very important. It is highly tested. ये बहुत highly important chapter है. To make sure that you go it thoroughly. अच्छे से सारे याद करना कि राइबोस में कितने कार्बन्स होते हैं, DNA में कितने होते हैं, सब कुछ याद रखना है. Bonds याद रखने हैं. Everything that is included, even the diagrams that have been giving you, उनके नीचे caption होती है. Do make sure that you read that caption as well. Here we have enzymes. Enzymes are very important. Enzymes का table है that is usually tested. इसका not in AKU test but also in PMC के test, PMDC के test में भी बहुत heavily tested होते हैं. फिर हमारे पास cell है. Cell, it is important but relatively less important. Classification and of acellular life ये भी इतना important नहीं है, लेकिन लेस इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है पढ़ना नहीं है, पढ़ना सारा है, लेकिन सबसे ज्यादा एम्फसाइज जो करना है ना वो हाई यील्ड टॉपिक्स पे करना है, जैसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, फंजाई हो गया. फंजाई के बहुत आते हैं. फंजाई का मेक श्योर दैट यू हैव दैट मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट थॉरोली और अच्छे से सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स याद हो. प्लांटी, इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. आफ्टर किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बायो एनर्जेटिक्स भी बहुत याद रखना है आपने. सारी कैल्विन साइकिल, सिट्रिक साइकिल, क्रेब्स साइकिल, सब कुछ आता है. फिर होम्योस्टेसिस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. सपोर्ट एंड मूवमेंट बहुत आता है. कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल सब टेस्ट होता है. वेरिएशन एंड जेनेटिक्स, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. वेरिएशन एंड जेनेटिक्स में हमारे पास जितने भी सेक्स लिंक्ड डिजीजेस होते हैं वो आना चाहिए आपको. सारे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स जो भी है ना, उसके जितने टेबल्स हैं, उसमें जितनी डायग्राम्स हैं, मेक श्योर दैट यू विजिट देम प्रॉपर्ली. और बाकी रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट बट relatively less important. Now coming to chemistry, केमिस्ट्री में सबसे पहले स्टोइकियोमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें बहुत ज्यादा लोग मोल्स में फंसते हैं, उनको नहीं आ रहा होता. मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट रियली वेल. एटॉमिक स्ट्रक्चर, इट इज इंपॉर्टेंट बट रिलेटिवली लेस. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको सारी कंडीशंस पता होनी चाहिए इक्विलिब्रियम की. डायनामिक पता होना चाहिए, डायनामिक क्या होता है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, ये सारे हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट होता है, बफर सॉल्यूशंस, ये सब आना चाहिए. केमिकल काइनेटिक्स में जितने भी हमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, वो सब पता होनी चाहिए. उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं और AKU likes to test concepts, तो आपने concepts बनाने हैं. Solution and colloids extremely important, सब पता होना चाहिए. Suspension क्या होती है, transparent solution क्या होती है, opaque क्या होती है, everything you must know. फिर we have organic compounds. Organic chemistry is the backbone. आपने organic chemistry
पंजाब से करो, फेडरल से करो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा टाइम देना है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा हाई यील्ड होते हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन हमारे पास है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एथर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर कि आप इनको सबसे ज्यादा टाइम दो और आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे हों। देन वी हैव फॉर फिजिक्स वी हैव measurements. It is relatively less important, but it is still significant. Vectors and equilibrium, this is most important. इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अच्छे से पढ़ना है सबने। इसके फॉर्मूलाज होते हैं, आपको पता होने चाहिए, क्लोज ट्राइंगल कैसे बनते हैं, एवरीथिंग, मोशन एंड फोर्स। और इसलिए हमारे पास एक प्री मेड का बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है फॉर वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। सो मेक श्योर दैट यू practice your questions from there. Motion and force, it is extremely important. Work, power, energy important है, oscillations, waves, electrostatics, current electricity में सब पता होना चाहिए क्या होता है, conventional current, everything you must know. Rest are important topics but relatively less significant. Now we can move on. Okay, so will I be able to prepare in such a short time? Sure. I know people who have prepared in 1 month time just because of their effective study methods and their complete dedication. So इसकी तो बात, you guys have enough time. Like अभी जून स्टार्ट हुआ है, जून है, जुलाई है, अगस्त है. You guys have 2 months at least. So make sure that you make most of it. So अब आपको, अब बाय द टाइम एफएससी ए लेवल्स वाले बच्चों के पेपर खत्म हो गए होंगे, कुछ के खत्म होने वाले होंगे, तो लेकिन आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन चुके होंगे। सो अब जो टाइम है वो सबसे ज्यादा फिगर आउट करना है कि सबसे ज्यादा हमें हमारे वीक एरियाज क्या है, हमें किस पे मेहनत करनी है। मेक श्योर यू मेक योर ओन लिस्ट हाईलाइटिंग योर वीक एरियाज, मेक श्योर यू रीविजिट योर कॉन्सेप्ट्स एंड मेक श्योर यू प्रैक्टिस अ लॉट। डेली आपका टारगेट होना चाहिए और सेट नंबर ऑफ एमसीक्यूज कि मैंने ये करना है। ठीक है, अब आप लोगों ने ऑलरेडी 2 साल माशाल्लाह से इतना अच्छा पढ़ के आ रहे होते हो कि कॉन्सेप्ट्स बने होते हैं, बस उनको अब रिविजिट करने हैं। फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स उनके लिए डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कंटेंट नया होता है तो उनको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, लेकिन बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी एमसीक्यूज की तरह पढ़ना होता है। सो आई नो कि इट इज़ डिफिकल्ट बट यू गाइस कैन डू इट। नो अदर एग्जाम, अब आपके पास कोई टाइम नहीं है, अब तो कोई एग्जाम भी नहीं है। सो मेक श्योर यू मेक अ गुड टाइम टेबल, यू फॉलो इट, you revise your concepts, you practice a lot. So I think best wishes. अच्छा, अब आई लाइक टू जंप इन, सॉरी। यार ये कॉमन सवाल होता है एंड आई कैन रिलेट बिकॉज ये मेड स्कूल में भी वो मेरे साथ और काफी लोगों के साथ हो रहा होता है, तो लाइक सब सुनो, ठीक है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सवाल ये है कि यार मुझसे फोकस नहीं हो पाता, पढ़ाई में कर रहा होता हूँ लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा। मैं 5 मिनट पढ़ता हूँ और फिर मैं 1 घंटे के ब्रेक पे चला जाता हूँ। फिर मैं 5 मिनट पढ़ता हूँ, मोबाइल यूज करने लगता हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स देखने लगता हूँ, टिकटॉक स्क्रॉल करने लगता हूँ। मैं क्या करूँ? हाउ डू आई मेंटेन फोकस? नाउ दिस इज सो इम्पोर्टेंट। एक काम करता हूँ, मैं तुम लोगों ने स्क्रीन शेयर करके एक चीज समझाता हूँ ऑन वन नोट, बस ये इम्पोर्टेंट। 1 मिनट एंड ये सारे सुनना, ठीक है, बिकॉज इट रियली हेल्प्स। राइट, वन नोट, ऑलराइट। आ जाओ भाई। 2 टेक्निक्स है मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि मैंने पर्सनली यूज की हैं एंड इट रियली हेल्प्स। ऑलराइट, मेरे स्कूल में तो ये टेक्निक्स यूज करने का भी टाइम नहीं है, बट तुम लोगों के लिए हेल्पफुल है। एक टेक्निक का नाम है फेनमैन्स टेक्निक। डोंट वरी, ये कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, टेस्ट नहीं हुआ कि कौन सी टेक्निक थी, तुम लोगों की हेल्प के लिए। ऑलराइट, सो फेनमैन्स टेक्निक ये क्या होती है? आपने कोई चीज पर, चल इससे पहले एक और चीज बताता हूँ, चलो पोमोडोरो टेक्निक बताता हूँ क्योंकि वो आई थिंक ज्यादा रेलिवेंट होगा। उसके बाद में आता हूँ फेनमैन। पोमोडोरो, ये अजीब सा नाम है लेकिन ये काफी हेल्पफुल होता है। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब ये होता है कि व्हेन यू स्टार्ट स्टडीइंग, राइट, आपने पढ़ना शुरू किया, यू सेट अ हाफ एन आवर टाइमर ऑन योर फोन। आपने अपने फोन पे आधे घंटे का टाइमर लगाया। उन आधे घंटे में आप पूरी 100% फोकस मेंटेन करके अपनी पढ़ाई करें, ठीक है। हेडफोन्स लगाएं, यूट्यूब पे जाके सर्च करें वाइट बफर नॉइस या बफर नॉइस, ठीक है, वो लगा के आप बाहर की सराउंडिंग्स की आवाज ब्लॉक कर सकते हैं एंड यू जस्ट फोकस 100% ऑन वॉट एवर यूर डूइंग। आधे घंटे का जब टाइमर पूरा हो गया ना, यू टेक अ 5 मिनट ब्रेक।
प्रिसाइजली 5 मिनट, ये 5 से 50 मिनट पे नहीं जाना चाहिए, 5 मिनट का ब्रेक लेना है आपने, एंड देन यू कम बैक टू पोमोडोरो टेक्निक, यानी कि आप दोबारा से आधे घंटे वाली पढ़ाई पे आ जाए। तो जिस थिंक अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आपने आधा घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, फिर आधा घंटा पढ़ा, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, ऐसे कहते कहते अगर आपने पूरे 6 घंटे पूरे किया ना, तो सोचो तुमने कितना पढ़ा है। 6 घंटे में तुमने 5.5 घंटे पढ़ा है, और सिर्फ आधा घंटा तुमने ब्रेक लिया। टेक्निकली अगर तुम 5-5 मिनट ब्रेक को कंबाइन करो, अब उन 5 मिनट में क्या कर सकते हो, कुछ भी कर लो, जाके अपने पेरेंट्स से बात कर लो, दोस्त को कॉल कर लो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लो, लेकिन उन आधे घंटे में सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना। दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक, रिसर्च टेक्निक है, ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब आते हैं फेमस टेक्निक पे। फेमस टेक्निक फोकस के लिए नहीं है, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि आपने कुछ पढ़ा, आपको कैसे पता चला कि मैंने सही से पढ़ लिया, लाइक मुझे समझ भी आया है या फिर मुझे समझ नहीं आया। फेमस टेक्निक ये होती है, आपने कुछ पढ़ा ना, आप जाएं अपने दोस्त के पास और उसको वही टॉपिक समझा दें, ठीक है, जो आपने टॉपिक पढ़ा है ना, वही टॉपिक उसको समझाओ, समझाते हुए जहां आप फंसे ना, समझ जाना वही आपका लैक है इन अंडरस्टैंडिंग, और आपको दोबारा से जाके कवर करें। अब घर में कोई दोस्त तो होगा नहीं, तो किसको समझाएं, अपने सामने अपने मोबाइल फोन को समझा दो, अपने सामने तुम्हारे सामने पौधा रखा हुआ है ना, उसको समझा दो, प्रिटेंड कि वहां कोई आदमी बैठा हुआ है या लड़की बैठी हुई है, उसको समझा दो, राइट, इट वर्क्स, एंड उससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। तो ये दो टेक्निक्स हैं, प्लीज एम्प्लॉय दिस, इट विल रियली हेल्प। ऑलराइट, फिर एक बात आती है यार, मुझे इम्पोस्टर सिंड्रोम हो रहा है। इम्पोस्टर सिंड्रोम क्या होता है, कुछ लोगों को हो रहा होता है लेकिन नाम ही नहीं पता होता। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है, पढ़ते हुए ना आपको ये लग रहा होता है कि यार मैंने इतना पढ़ लिया लेकिन मुझे अभी भी नहीं लग रहा कि मेरी पढ़ाई हुई है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है उसने एक हफ्ते में इतना पढ़ लिया है कि मैं एक महीने भी वो नहीं पढ़ सकता। तो क्या मैं एक ही और टेस्ट दूं, मतलब मैं पास भी कर पाऊंगा, मेरे देने का फायदा है या नहीं? दिस इज कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको अपनी एबिलिटीज पे इतना भरोसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है आपने तैयारी नहीं की है। डोंट फॉल इनटू दिस, ठीक है, आपके जहन में बार बार ये ख्याल आएगा, इग्नोर दैट, ठीक है, इग्नोर दैट, कीप स्टडीइंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड आई कैन गारंटी यू कि आपकी तैयारी हो रही है, इवन दो कि आपको लग रहा है कि मेरी तैयारी नहीं है। एग्जाम डे पे काफी लोगों के साथ ये होता है कि पूरा पढ़ के जाते हैं, 100% सिलेबस किया हुआ होता है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए 5 मिनट का एग्जाम शुरू होने में उनको लग रहा होता है मैं सब भूल गया या भूल गया, मुझे कुछ नहीं आता। वहां रोना शुरू हो जाते हैं, लोग बेहोश हो जाते हैं। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप, यू नो एवरीथिंग, यू प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, ठीक है, आपको सिर्फ अपनी तैयारी करनी है अभी। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन एल्स, ठीक है, अपना प्रोग्रेस मतलब खुद को अपने आप से कंपेयर करो कि कल मैंने इतना पढ़ा था तो आज मैंने थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। और अपने लिए वीकली गोल सेट करो, ठीक है, डेली गोल सेट करना है ना काफी रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है कि आज मुझे पूरा चैप्टर करना है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं पाएगा। पूरे हफ्ते ये डिसाइड कर लो कि भाई मुझे इस हफ्ते ना 3 चैप्टर कवर करने बायो के, पूरी ऑर्गेनिक कवर करनी है, पूरी नहीं बहुत बड़ी हो जाएगी, आधी ऑर्गेनिक कवर करनी है, एंड फिजिक्स के 3 चैप्टर्स कवर करने हैं। पूरे हफ्ते का जो है ना, अब तुम अपनी मर्जी से डेज डिवाइड कर सकते हो, राइट, कि मैं मंडे को इतना कर लूंगा, ओ ट्यूसडे को मुझे दावत में जाना है तो मैं उससे थोड़ा कम पढ़ूंगा, वहां जो रह गया वो मैं वेडनेसडे को कवर कर लूंगा। तो वीकली गोल सेट करो, डेली गोल सेट करना थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो दीज वर सम टिप्स जो कि तुम लोग को हेल्प करेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, एंड या आई विल पास इट ऑन टू अदर्स। ओके, सो प्रॉब्लम्स इन टेस्ट। सबसे सबसे बड़ा मसला है वो टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम कम। आई नो, क्योंकि हमारे पास एग्जाम एंजाइटी हो रही होती है, भले कितना भी हमने प्रैक्टिस किया हो इन अ कंडीशन एनवायरनमेंट, लेकिन उस वक्त सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती है। उस वक्त आपकी एंजाइम एंजाइटी होती है, प्रेशर होता है, पसीने छूट रहे होते हैं, समझ नहीं आ रहा होता क्या, वो गलत सवाल देख लिया, कोई मुश्किल सवाल देख लिया, उस पर ज्यादा टाइम लगा दिया। तो दैट इज वेयर योर प्रॉब्लम्स लाइज इन टेस्ट। सो डू नॉट टेक रिस्क विद। अच्छा हाँ, तो हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि जो साइंस रीजनिंग क्वेश्चन है उस पर नेगेटिव मार्किंग होती है, -0.25। फॉर एग्जाम्पल आपने 4 गलत सवाल कर दिए, आपका 1 मार्क तो चले ही गया, ठीक है। और और अगर लेकिन हमारे तो इसलिए साइंस रीजनिंग में इट इज ऑलवेज हेल्पफुल कि इफ यू डोंट नो द आंसर यू माइट स्किप, जस्ट स्किप। लेकिन हमारे पास जो मैथ और मैथ रीजनिंग है उसमें वी कैन
जो साइंसेस पोर्शन है, सॉरी, साइंसेस पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो इसमें इट इज ऑलवेज बेटर टू स्केप इफ यू डोंट नो द आंसर, डू नॉट टेक द रिस्क, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास मैथ रीजनिंग है उसमें हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो आई नो कि हम सबसे ज्यादा टाइम किस पे लगाएंगे, साइंसेस पोर्शन पे, क्योंकि उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, कॉन्सेप्चुअल होते हैं। इवन दो इफ यू हैव लाइक सबसे ज्यादा टाइम साइंसेस पोर्शन को दे दिया और अब मैथ रीजनिंग के लिए टाइम कम है, तो यू कैन जस्ट टेक मार्क एंड मूव ऑन, क्योंकि उसमें हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। सो दैट इज द मेन पॉइंट। इवन आई रिमेम्बर आई डिड मोस्टली 4 क्वेश्चंस ऐसे ही, क्योंकि मुझे पता था नेगेटिव मार्किंग और एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एंड आई वाज रनिंग आउट ऑफ द टाइम। सो आई थिंक अगर ऐसा कोई कुछ हो तो मेक श्योर कि यू डू सर्किल, इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, जस्ट सर्किल अ रैंडम letter. Next. Okay, so what are some really helpful studying strategies? Number one, retaining information. हम daily new chapters पढ़ते हैं, daily new topics पढ़ते हैं, we tend to forget, we don't remember. So what do? We have these two extremely useful techniques called active recall and spaced repetition. Active recall में क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ होता है, we start teaching, we start revising the concepts again and again. उससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू स्टडी टॉपिक 1 डे, उसको सेकेंड डे रिवाइज करो, फिर उसको 4th डे रिवाइज करो। मेक श्योर कि उस वो आपको रिवाइज करते रहे हो, सो दैट यू हैव बिन, उसके वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सॉलिडिफाइड हो चुके हैं ब्रेन में। सेकेंडली वी हैव स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन में क्या हो रहा है, हम टाइम बाउंड होते हैं, हमने पढ़ना होता है, तो हम स्पेसली एक टॉपिक को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक आज टॉपिक पढ़ा, कल रिवाइज किया, फिर 4th डे रिवाइज किया, फिर 10th डे रिवाइज किया। जब रिवाइज करते रहोगे तो वो चीज याद हो जाएगी। अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसे हमने एग्जांपल दिया, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाए एक दिन उसको रिविजिट किया, अगले दिन फिर एक हफ्ते बाद रिविजिट किया, फिर फिर 2 weeks later, then a month later, so on and so forth, you will get your concepts solidified. Secondly, how long you should study for, it completely depends on you. Some people study क्वालिटेटिवली बहुत अच्छा 4 घंटे में पढ़ लेंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, दे हैव रियली गुड फोकस। कुछ लोग 10 घंटे में पढ़ते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप पढ़ कैसे रहे हो। कुछ लोग कम पढ़ते हैं लेकिन अच्छा पढ़ते हैं, कुछ लोग ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन उनका फोकस और क्वालिटी बहुत बुरी होती है। सो मेक श्योर कि आप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज ना करो, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, और ऐसा चाहिए कि 2 घंटे मैंने टॉपिक ये है, ये टॉपिक पढ़ो, हाउ मच टाइम इट विल टेक, एंड डू मेक श्योर दैट यू स्टडी विद कंप्लीट फोकस एंड विद कंप्लीट डेडिकेशन। एंड आई एम श्योर कि उसमें कम टाइम भी लगेगा और आपको कम टाइम में अच्छा समझ आएगा। मेक योर ओन नोट्स। तो आप हमेशा अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि अपने नोट्स में इंसान को पता होता है कि ऑन व्हाट टॉपिक आई शुड एम्फेसाइज मोर, कौन सा पॉइंट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लिस्ट होती है कि कौन सी चीज बहुत अच्छी है। अच्छा, सो आई नो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने अंकी यूज किया था फॉर प्री मेड। बलाज इज वन ऑफ द पर्सन हु यूज अंकी प्री मेड के लिए, एंड ही नोज एक्सट्रीमली वेल। I would say कि after I complete, he will guide you how to make your own Anki flashcards. So वो बहुत important होते हैं। फिर प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ, फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स मोर देन योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। ऐसे नहीं होता कि जो चीज स्ट्रॉन्ग है उसको बार बार पढ़ना, दिस इज यूजलेस। यू नीड टू फोकस एंड यू नीड टू गिव more time to the areas which are weaker, which need more dedication. Then more MCQs practice। जो वीक हैं उनकी सबसे ज्यादा MCQs practice होगी, जो स्ट्रॉन्ग है उनकी कम होगी लेकिन होगी। कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग, रट्टे मारोगे, 4 दिन रट्टे मार लो या भूल जाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बना के फर्स्ट यू अंडरस्टैंड एंड देन यू लर्न एंड मेमोराइज, दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट एवरीवन हियर डज। देन FSC के कॉन्सेप्ट्स पे अच्छी ग्रास्प होनी चाहिए। ए लेवल्स, जो भी ए लेवल्स के उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, क्योंकि AKU हमेशा कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है। दे वोंट आस्क यू स्पेसिफिक लाइंस फ्रॉम द बुक, दे विल ऑलवेज टेस्ट योर कॉन्सेप्ट। फिर आपका FSC स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। 40% ऑफ योर एग्रीगेट इज फ्रॉम FSC स्कोर। तो FSC स्कोर रियली मैटर्स इन PMC।
PMC में भी और AKU के लिए भी, after you clear your test and then you proceed to the next stage, so score does matter. And for PMC in fact 40% matter, 10% आपका metric का होता है and 50% is your MD get. क्वालिटी बेस्ड लर्निंग वी टॉक्ड अबाउट के क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। दिन में 4 टॉपिक्स पढ़ रहे हो लेकिन समझ कोई भी नहीं आ रहा, और अगर एक टॉपिक ही अच्छे से पढ़े वो समझ आ गया, सो दैट इज द हाईलाइट ऑफ योर डे। एंड हैव अ गोल और मोटिवेशन, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपके अंदर से किसी के प्रेशर या प्रेशर में नहीं आके करो। मेक श्योर कि वट एवर यू डू इट बाय योर हार्ट एंड विद योर कंप्लीट हार्ड वर्क। Okay, so we now have some preparation tips. Set your timetable and follow it. हर बंदे का अपना टाइम टेबल होता है, वेरी करता है उसकी कि वो कैसे बनाता है। some people like to study it during night, some people like to study during day. Completely depends on you, क्योंकि सबका एंड गोल तो टेस्ट एस करना है ना। तो whatever timetable you make sure that you stick to it and you follow it. Don't skip anything. skip ना करना, भले लो यील्ड हो पढ़ के जरूर जाओ। लो यील्ड का मतलब ये नहीं होता वो टेस्ट में नहीं आता। लो यील्ड का मतलब ये होता है कि उससे कॉन्सेप्ट्स कम टेस्टेड होते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाता है। डोंट स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स एंड स्टिक विद व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन द लास्ट 6 months. इट इज हाईली इम्पोर्टेंट कि नई चीजें ऐसे ना पढ़ो कि वो याद ना रहे and you forget the old things. Make sure whatever you study you integrate with your already learned concepts. Revise everything efficiently and occasionally. Spaced repetition again, active recall again. Solve past papers. Pre-med we will soon launch our yearly past papers for AKU mock test भी आएंगे, लेकिन वैसे हमारे पास नम्स के हैं। आई पर्सनली इवन ट्राइड नम्स पास्ट पेपर्स, दो वो थोड़े डिफरेंट होते हैं लेकिन पास्ट पेपर्स तो है ना, आपने तो सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करने हैं। तो मेक श्योर यू डू पास्ट पेपर्स ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ एग्जाम। यू कैन स्टार्ट बिफोर 2 weeks, तो इट इज ऑलवेज गुड। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फिजिक्स हमेशा प्रैक्टिस हो, बायो भले बायो हो, बायो की भी प्रैक्टिस हो। जितना ज्यादा सवाल होंगे उतने ज्यादा कॉन्सेप्ट रिकॉल होंगे और उतनी रिटेंशन बढ़ेगी। सो मेक श्योर एंड ऑल्सो मेक श्योर यू डोंट बर्न योर सेल्फ आउट। अच्छे ब्रेक्स लो, मीनिंगफुल ब्रेक्स लो, अच्छा पढ़ो, फैमिली से बात करो, फ्रेंड को कॉल करो, वॉच अ शो, जो भी आपको शो पसंद है, वॉच अ शो, वॉच अ टीवी ड्रामा और एनीथिंग यू वुड लाइक टू वॉच। और मेंटल पीस हो, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेस लेने का कोई फायदा नहीं है। इवेंचुअली एग्जाम के बाद भी स्ट्रेस होना है, तो वो जो सारा स्ट्रेस है ना वो एग्जाम के बाद के लिए बचा के रखो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अच्छा वैसे आई वुड लाइक टू से कि एक्स्ट्रा Yeah, so a lot of the people I was just seeing in the chat, extracurricular activities में questions were just pouring in. बहुत सारे लोग पूछ रहे थे. So primarily we are focusing on the AKU test right now in this session, क्योंकि अभी I feel like with 65 days to go, your primarily goal should be the AKU test. क्योंकि when you pass that, that's when you're going to get shortlisted for the interview. और एक्स्ट्रा करिकुलर्स की बातें आपकी विल कम इनटू प्ले फॉर द इंटरव्यू सेक्शन, उसके अंदर आप इसका मेंशन करते हो। तो इसलिए योर प्राइमरी गोल अभी आपका होना चाहिए टू पास द टेस्ट, एंड सो टेस्ट प्रिपेयरिंग इज शुड बी योर नंबर 1 गोल फॉर राइट नाउ. So take one thing at a time. Don't overwhelm yourself. And I'm sure कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे, you must have been overwhelmed with the resources, the different things we talked about. So take things step by step. Do not overwhelm yourself. उससे बस ये होगा कि you'll be just paralyzed. आप ये सोचते रह जाओगे, है मैंने यहाँ से पढ़ना है, मैंने ये भी करना है, मैंने YouTube वीडियोस भी देखनी है, मैंने एंकी भी करना है, मैंने ये भी करना है, which is like do what suits you. You do you. Everybody की requirements different है, आपकी needs different है when you're preparing. Your learning styles are different. तो आपको जो suit कर रहा है आप वो करो. और प्लीज अभी के लिए फोकस ऑन द टेस्ट. पहले टेस्ट पास हो गए तो आपके एक्स्ट्रा करिकुलर्स विल कम इनटू प्ले. बाकी कैन वी मूव ऑन. बाकी क्या कहते हैं, another thing is कि since everybody is asking about the extracurriculars, let me just lightly brush upon it.
कि do internships, make sure that you have अपने CV के अंदर you have things जो reflect your personal interest, your niches, things that you believe in और जिनके बारे में आप passionate feel करते हो. वो बस वही नहीं है कि जो चलें सारे करने हैं तो हम भी कर लेते हैं, नहीं. Those should be specific to you. Those should show who you are. आपकी इंडिविजुअलिटी उनको डिफाइन करना चाहिए इन एक्टिविटीज ने. तो आई एम श्योर अभी बैठ के आप रिफ्लेक्ट अपॉन द 2 4 years दैट यू स्पेंड. सोचो आपने क्या क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की हैं. इफ यू फील के वो कम थी तो टेक अप मोर थिंग्स. डोंट टेक अप थिंग्स कि बस इंटर्नशिप करनी है एक ईयर में एडमिशन के लिए तो बस इसलिए कर रही हूँ मैं. नहीं, people are going internship just for that sake नहीं करो. Do internships that you feel passionate about and those that reflect your interest. So यहाँ पर we've added a number of internships that you can do. We have WWF, TCF, Goodwill Ambassadors, LAMSKI, AQT. So do those internships, but इनमें से selectively do the internships. ये नहीं कि don't try to one size fit all. बस सारे करेंगे तो मैं भी करूंगा, मुझे भी आई वांट दिस ऑन माय सीवी. नो, एट द एंड ऑफ द डे इंशाल्लाह व्हेन यू पास द टेस्ट आपको फिर इन योर इंटरव्यू यू नीड टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड इंटरव्यू आपको देखे इंटरव्यू सी राइट थ्रू यू. अगर आपने इस तरह की हरकतें की हुई हैं इंटर्नशिप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिशन, नहीं, देयर गोना सी थ्रू इट. कोई एक चीज भी आपने की होगी बट दैट शोज हाउ पैशनेट यू आर अबाउट समथिंग, दैट इज गोइंग टू मैटर मोर. जो आपने 100 चीजें की होंगी दैट डू नॉट शो हु यू आर. Okay, we can move on from here, please. Oh, okay. Okay. What should a gap year student do? You want to say something? No, Hania, go on. Okay. What should a gap year student do during their gap year? Okay, so I also took a gap year because I was not able to pass my test in the first attempt, and I think it's completely fine to take a gap year. There's nothing to worry about, no, nothing to stress so much. Eventually in the long run it won't even matter. So जिसको भी है ना, I know people take gap years. AKU में बहुत ज़्यादा students हैं जिन्होंने gap year लिया हुआ है, but they are performing really well here. So make sure कि अगर gap year लिया है, you make most out of it and you use it properly. You study well for AKU test. You ace it, you ace the interview, and you make it, right? So now coming, can we move on? So what are some tips for preparing for the MDCAT exam during your gap year? So for people who are here and are on gap year, practice with mock exams क्योंकि आपने already पहले पढ़ा होता है. You don't need to अब आपके concepts already बन चुके होते हैं, नहीं बने होते. It is completely fine. Just go through it. You have plenty of time. Just make your good concepts and work. और ज़्यादा प्रैक्टिस करो. और क्योंकि हम लोगों के पास एडवांटेज होता है कंपेयर टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉट ऑन गैप ईयर बिकॉज वी हैव सो मच टाइम टू प्रैक्टिस. सबसे पहले तो आई एम श्योर कि सबने अपना अच्छे से ब्रेक लिया होगा गैप ईयर में सबने, एंड नाउ यू ऑल आर गियरिंग अप फॉर द एग्जाम. Make studying a regular part of your routine and commit to a consistent study schedule. सबने रूटीन फॉलो करनी है क्योंकि गैप ईयर में मोस्टली ये होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू स्कूल, यू आर नॉट हैविंग एनी एग्जाम्स एज सच, सो वी काइंड ऑफ बिकम लेट बैक. तो इसलिए ना सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि यू कीप ऑन चेकिंग योर सेल्फ कि आई एम गोइंग ऑन द राइट पाथ. सेकेंडली, सेट अचीवेबल गोल्स. वो गोल्स बनाने जो डेली अचीव हो जाए, या जैसे बलाज ने कहा वो गोल्स बनाओ जो वीकली अचीव हो जाए. Reward yourself for progress. Talk to a friend. Watch a movie. Watch a season. If you like painting, do painting, do drawing, do whatever you like. Just do from your heart and seek support from family. I know this must be a very demanding time. इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है क्योंकि हमारे फ्रेंड्स जो होते हैं उन सबके एडमिशन्स हो चुके होते हैं, सबकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, एंड वी काइंड ऑफ कंपेयर आवरसेल्फ विद देम कि देखो उसका तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हो गया, उसका मेडिकल कॉलेज में हो गया, एंड आई एम सिटिंग एट होम बिकॉज ऑल योर फ्रेंड्स आर अवे, यू आर जस्ट अलोन. तो इट्स ईजी टू फॉल इनटू दैट ट्रैप. लेकिन आपने ये सोचना है कि आपका एंड गोल क्या है. आपने अपनी लाइफ किसी से कंपेयर नहीं करनी. आपने सिर्फ अपने बारे में सोचना है कि इफ आई एम टेकिंग अ गैप ईयर, ये
this is related to me, and I know how I will make the most out of it. So there's no need for comparison with any of your friend, because you will eventually make it. Create a study plan while considering the whole timeline. अच्छा देखो, सबसे ज्यादा हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम होता है, वी नो हाउ, और हम इसमें बहुत लेट बैक हो जाते हैं, तो इसलिए इट इज ऑलवेज गुड कि स्टडी प्लानर हो, उसमें मार्किंग्स होंगे, आज मैंने ये पढ़ना है, कल मैंने ये पढ़ना है, रिवाइज करना है। और हमें, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा टाइम होता है, इसलिए हमारे कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अच्छे होने चाहिए। दैट वाज माय गोल। यूज क्वालिटी स्टडी रिसोर्सेज। टाइम बहुत होता है, वी टेंड टू यूज एवरी अदर रिसोर्स दैट इज आउट देयर, एवरी अदर यूट्यूब चैनल, लेकिन यहाँ हमने प्रायोरिटी करनी है, प्रायोरिटाइज करना है कि हमें कौन सा बेस्ट करते हैं, और हमने वी नीड टू स्टिक टू दैट। देयर इज नो नीड टू ट्राई न्यू एंड डिफरेंट रिसोर्सेज विच आर नॉट इवन हेल्पफुल। जस्ट stick to the few good resources or that are sufficient, more than enough. Join online forums or groups. What I did personally was I joined these forums. उससे मैं खुद बहुत dedicated रहती थी, because I used to see other people studying, then I started to study myself. We used to have जैसे pre-med का WhatsApp group है, उसपे questions post होते थे, I used to solve them. बाकी लोग भी सॉल्व कर रहे होते थे, वो एक डिस्कशन होती थी। इट इज रियली हेल्पफुल, बिकॉज कोई क्वेश्चन पॉप अप होता है, यू सी इफ आई नो और नॉट, अगर आपको पता होता है, यू शेयर योर सोल्यूशन। तो दिस इज, आई थिंक हमें सबसे ज्यादा अच्छा समझ दूसरों को पढ़ाने से आता है। तो ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म्स हो, जैसे प्री मेड का व्हाट्सएप ग्रुप है, you guys are already in there, where you can connect with other students, exchange study tips, share resources. It is always helpful to go and seek out for a study partner. वैसे भी study partners online मिल जाते हैं, WhatsApp groups पे इतने लोग पढ़ रहे होते हैं। It is completely, बहुत, मेरे लिए बहुत helpful था, क्योंकि I used to get motivated. So pre-med का WhatsApp group है, if you are not in there, make sure you join that as well. अब काफी लोग, खैर ये इस सेशन से इतना रेलेवेंट नहीं है, बट जस्ट एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं। फाइनेंशियल एड है AKU में, ये पहले भी बता चुके हैं इन द एप्लीकेशन वाला सेशन के यस फाइनेंशियल एड अवेलेबल है AKU में। प्लीज ये मत करना कि तुम लोग टेस्ट देने ना जाओ, या टेस्ट देने जाओ और फिर इंटरव्यू देने ना जाओ जब क्लियर कर लो, बिकॉज बहुत लोग ये करते हैं बिकॉज उनको लगता है फीस पे नहीं कर सकते वो AKU की, विच इज अ वैलिड थॉट, राइट। इस साल की AKU की फीस वॉज 30 लाख रुपीज, राइट, और हर साल ये बढ़ती रहती है। तो all of us, majority of us, me included, are from middle class families, जो कि सिर्फ अपना नहीं अपने पेरेंट्स का भी सोच रहे होते हैं। तो इट्स अ नॉर्मल थॉट कि यार AKU के बजाय किसी पब्लिक यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, बट द थिंग इज AKU फाइनेंशियल एड ऑफर करता है, और फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई कब करना है, जब तुम लोग इंटरव्यू क्लियर कर लो और तुम लोग को एक्सेप्टेंस आ जाए, ठीक है, उससे पहले नहीं करना। So जो forms है they are available on AKU की website, so you can only apply once you get your acceptance, ठीक है। तो acceptance तब होगी ना जब तुम लोग इंटरव्यू देने जाओगे, जब टेस्ट क्लियर करोगे। तो अभी just focus on clearing the test, passing the interview, and then thinking about the financial aid, ठीक है। तो just don't give up in the midway, all right। Then interview की बस थोड़ा सा बता देता हूँ कि when you clear your test ना, तो आपको AKU से email आती है telling you your interview slot। तो एक ही दिन में 2 इंटरव्यू होते हैं, और हर दोनों इंटरव्यूज के बीच में हो सकता है 10 मिनट का गैप, हो सकता है 1 घंटे का गैप हो, तो इट डिपेंड्स। और हर इंटरव्यू डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कॉन्वर्सेशन कैसे जा रही है, जो भी आपका इंटरव्यू लेगा उसके साथ, वो 20 मिनट की भी हो सकती है, वो 10 मिनट की भी हो सकती है, या वो 1 घंटे की भी हो सकती है, ठीक है। और बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि यार 10 मिनट की हुई है तो मेरा एडमिशन नहीं होने वाला, बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगा या अच्छा नहीं लगी, और अगर 1 घंटे की हुई है तो मैं बहुत पसंद आ गया और मेरा तो 100% है, नहीं, डिपेंड्स, ठीक है। तो इंटरव्यू की अभी नहीं सोचनी, जस्ट फोकस ऑन क्लियरिंग द टेस्ट। एंड जस्ट वन लास्ट थिंग फ्रॉम मी कि जिंदगी मुश्किल है, ठीक है, अपने लिए और मुश्किल ना बनाओ, क्योंकि जिस प्रोफेशन के लिए तुम लोग तैयारी कर रहे हो ना, उसमें हर मॉड्यूल के साथ हर महीने तुम लोग की जिंदगी और मुश्किल होती जाएगी। तो अभी जितनी मुश्किल है उतनी रखो, आगे की मत सोचो, ओवरवेलम ना हो, अपने आप को भी ना करो और अपने पेरेंट्स को भी ना करो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, ठीक है। परेशान होने से कि यार बहुत कंटेंट है नहीं हो पाएगा, खुद भी परेशान होकर पढ़ भी नहीं पाओगे, अपने पेरेंट्स को भी करोगे, ठीक है। तो यू आर द किंग एंड यू आर द क्वीन ऑफ योर ओन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तुम लोगों के हाथ में, तुम लोग चाहो तो सेल्फ हेट के पूरे स्पाइरल में नीचे जा सकते हो, या तुम लोग चाहो तो अपने आप को खुद मोटिवेट कर सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। तो इट्स ऑन यू, जस्ट प्रिपेयर, ठीक है, तैयारी करते जाओ, एंड या यू विल बी एबल टू क्लियर द टेस्ट।
I would like to pipe in into this. You are going to reflect back on your pre-med journey, and you're going to realize just how different and grown up you appeared out of it. उससे इससे बाहर आप निकलोगे and you'll realize कि आपकी personal growth कितनी हुई है. So take this time not to whine about how hard life is, because it just keeps getting harder from module to module, as Balaj said. लेकिन take this time to go through the journey and just think कि in 6 months time इंशाल्लाह जब मेरा AQ में admission हो जाएगा, I'll think oh ये तो कितनी छोटी बात थी. तो इसलिए perspective, think of the perspective, how time is going to give you perspective. अभी आपको मुश्किल लग रहा है, but there is nothing that human beings cannot achieve when they set their mind to it. तो इसलिए you can do this. If we could do this, I know ये बहुत it is like a very corny thing to say, लेकिन अगर हम कर सकते थे तो obviously you guys can do it too. Whatever capabilities we have, you guys have them too. Maybe you guys have them better than us. You have better time management than us. So इसलिए don't worry, don't stress out, don't uh, think don't get into comparing yourself to others. Competition, say, don't go into competition, toxic competition with other people. This journey is about you. This is your journey. आपने at the end of the day you're going to get into AQ and you're going to become a doctor and you're going to do it for yourself. इसमें किसी दूसरे बंदे का नहीं होगा कि you, this is for you. Make this journey about yourself and not about comparing it to other people. अपनी progress आपकी होनी चाहिए, not other people जिनसे आप अपने आप को compare कर रहे हो. इसलिए go into it with a healthy mindset, not a comparing toxic mindset. Okay, that's all. I just wanted to mention one thing for people on gap year. I made it. You guys will also make it. हो जाएगा. Don't take stress. Just I used to do. Honestly, it does not even matter in the long run. When I look back, I'm even glad I took a gap year and joined AKU, because I know that this would be the best time I had with my parents, with my family, and even I mentioned this during my interview. So this is the time I would like to remember for the rest of my life. So make sure that you make the best of it. All right, so we have a good news for you guys. कि इससे पहले, अब तक से पहले PreMed के ऊपर you didn't have a very specific AKU वाला section. ठीक है, हमारे पास एक general questions का section था जो कि हम लोग AKU के लिए भी यूज कर रहे होते थे, MD CAT के लिए भी यूज कर रहे होते थे, NAMS के लिए भी यूज कर रहे होते थे. लेकिन finally, yes Hassan, finally we are launching a very AKU specific question bank. ठीक है, including the questions जो कि AKU test में होते. ठीक है, उस type के questions. So you have the sciences वाला section, you have the math reasoning and science reasoning वाला section अलग है. You have an option for timed test mode, तो आप लोग भी, yeah, that's a good suggestion. Add a dark mode too. I'll talk about it too, Hassan. Yeah, but we have a time test mode and we have a surprise for you guys as well. Okay, abhi reveal nahi kar sakte because it's a huge thing, but and it's probably gonna take time, but you guys will love it when it comes. Okay, so these are the features that are coming this week. So yeah, just stay in touch. And yeah, so again, thodi si promotion, PreMed.PK. Like I mentioned, I personally just use PreMed.PK for the questions. Okay, because one good thing about PreMed.PK honestly is कि अगर PreMed.PK ना होता तो questions की practice है, तुम लोग ये अलग resource होती, ये अलग resource होती, bio की यहाँ होती, physics की अलग होती, science और math reasoning की होती नहीं. तो one easy thing for you guys if you buy PreMed का subscription is कि तुम लोग को सारी resources एक ही जगह पे मिल जाए. ठीक है, which is a huge thing in saving your time. ठीक है, time save होगा. Plus you have questions. अभी जैसे बताए AKU specific questions भी आ गए हैं. You have questions for MD CAT के अलग, you have NAMS के questions अलग, then you have mock exams as well, right? Yes, PreMed is for MD CAT as well. You have mock exams as well, right? So I think this will be helpful for you guys. And these are some facts and figures written. Okay, you guys can read this, how PreMed helps students get into their dream university. So these are some of the features that PreMed.PK offers you when you're attempting the questions. So you have a dashboard, ठीक है, जिसमें आपको अपनी recent activity पता चलेगी कि कल कौन से आप questions attempt कर रहे थे, अब तक कौन से questions attempt कर लिए हैं. For example, question solve करते हुए आपको एक ऐसा question नजर आया जो कि आप चाहते हैं कि यार मैं एग्जाम जब करीब आने तो
एक दफा दोबारा से देख लियो क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिविजन हो रहा है मेरा, तो आप उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, या यू कैन ऐड दैट टू योर सेव क्वेश्चंस। देन यू हैव स्टैटिस्टिक्स के मैंने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, फॉर एग्जांपल 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, मेरे कितने सही हुए हैं, राइट, और कितना में मसला है, तो लाइक दैट। यू हैव अ ट्यूटर मोड एज, ठीक है, इसमें आपका जो पेपर है वो टाइम नहीं होता, ठीक है, और दिस इज लाइक अ ईयरली पेपर, लेकिन उसमें टाइमर नहीं लगा हुआ होता, और हर क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको ऑप्शन के बाद पता चल जाती है, तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ट्यूटर मोड। टाइम मोड भी है जिसमें आप टाइमर लगा सकते हैं ताकि आप अपनी टाइम की प्रैक्टिस भी कर सकें, ठीक है, एंड यू कैन रिपोर्ट अ क्वेश्चन एज वेल। तो हो सकता है आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नजर आया जिसकी जो इनकरेक्ट है या उसकी वर्डिंग करेक्ट है, बिकॉज यू मे हैव अ ह्यूज क्वेश्चन दैट, राइट, 34,000 क्वेश्चंस है, प्लस AQ के क्वेश्चंस भी आ गए हैं, सो हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे हों या ज्यादा भी हो, आपको लगे इसके ऑप्शन पे नहीं है या यू कैन रिपोर्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है, एंड वी लुक इनटू दैट एंड वी जस्ट चेक दैट क्वेश्चन, ऑलराइट। Yeah, some more features. You have topical questions as well. You have yearlies. मैंने बात कर ली है. Mock exams आ जाएंगे close to the test date. You can save the questions and again the report feature. And finally, we have a good news for you guys. Another good news for you guys, apart from the AQ वाला question section के, we're offering a discount code for you guys. ठीक है. If you buy a PreMed premium plan, ठीक है. आज रात को you'll get a 25% off. ठीक है, so आज रात तक का टाइम है, you have your time till 12 p.m. tomorrow 12 p.m. uh, हाँ तो perfect. So you guys can buy the subscription and you can use this code, ठीक है, तो सरप्राइज 500 वाला जो कोड है ना, ये आप अपने चेकआउट पे जाके यूज कर सकते हैं, you'll get a discount for 25%. अच्छा, काफी लोग पूछ रहे थे कि यार रिसोर्सेज कहाँ से लेंगी, तो ये एक QR कोड है, ठीक है, इसको स्कैन कर सकते हो, या फिर ड्राइव की जो लिंक है वो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है ना, गाइडेंस वाला ग्रुप, जितने भी है उन सब पे ग्रुप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो ड्राइव लिंक लिखी हुई है, तो आप वो ड्राइव लिंक यूज कर लें या ये वाली स्कैन करके यूज कर लें, एक ही लिंक है, ठीक है, बस ये थोड़ा सा ईज के लिए हम लोगों ने इसका QR कोड बना दिया है, स्कैन दैट एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस द ड्राइव, ठीक है, उसमें सारी बुक्स हैं, सारी रिसोर्सेज है जो मैंने मेंशन की थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑल ऑफ दिस, राइट, and that's it from all of us. So hopefully you got to learn a lot from this session.